Hello and welcome to today's new episode. This is video number 5 for learning fundamental analysis. In the last video, that is video number 4, I have discussed the asset side of the balance sheet. In this video, I will discuss the liability side of the balance sheet. I will try to cite real life example with the real balance sheet of few listed companies. I will show you how changes in the balance sheet impacts the performance of the stock. So this session is going to be very interesting. So without wasting time, let me share my screen. I hope my screen is visible and okay. So what I'm going to show you, I'm going to start with a balance sheet of this is Tata Steel Limited. We all know this company, so I need not to separately mention. And in front of us, the equity and liability side is displayed, right? So as we have discussed earlier also, like the main two components of the balance sheet are asset side, asset, and equities and liability. Equities and liability. So all together, a balance sheet is formed. And this, if you deduct the asset, if you deduct the liability from the asset, you will arrive at the equities, or we can refer it as net worth, right? So net worth or equities plus liabilities must be equal to the asset or total asset of the balance sheet. That is the golden rule of the balance sheet. So to understand, the first line item of the balance sheet is equities. So what is equities? Equity share capital and other equity. Now we will try to understand where from this equity comes from. तो उसके लिए थोड़ा सा एकदम बैलेंस शीट से बाहर निकल के वी हैव टू गो बैक टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जब एक कंपनी फॉर्म होता है, लाइक इट्स लेट्स से लिमिटेड और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, then what we do, like we go to the Ministry of Corporate Affairs, Company Affairs, and MCA, और उनको जाके there are certain procedure where we like the directors of the company, or let's say the directors of the companies and shareholders go and approach the Ministry of Company Affairs, Ministry of Corporate Affairs for formation of one particular company. तो उसके लिए नाम वगैरह सब कुछ फाइनलाइज होता है. एंड देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स हियर. मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स जब एक कंपनी अप्रूव करता है इन टर्न, लाइक let's say I'm going to float a private limited company, what I can do, like there are certain norms, like there must be at least 2 directors for private limited company. तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बोर्ड में 2 डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए. एक लिमिटेड कंपनी होगा तो देयर मे बी 7, आई थिंक देयर आर 7 डायरेक्टर्स, देयर मस्ट बी 7 डायरेक्टर्स, 3 if I'm not wrong, 3 directors and 7 shareholders. ऐसा कुछ norm है. So you have to comply with that particular norm. Afterwards, there are 2 concepts. आपको शेयर दिया जाएगा, मतलब your company will have like the Ministry of Corporate Affairs will issue, MCA will issue certain number of shares in the name of your company, for on behalf of your company. तो ये जो
issuance होगा, there are two concepts related to this. One is paid up capital, another one is authorized capital. तो क्या होता है ये authorized capital and paid up capital? Let's say layman term में I have formed a private limited company, right? So when I approached the MCA, I said, अच्छा उसके लिए there was one like regulation which has been relaxed recent past, probably in June or July. I think June 2024, the norm was relaxed. कि there must be 1 lakh rupees of paid up capital. इसका मतलब क्या है? पेड अप कैपिटल का मतलब है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट द कंपनी शुड हैव टू फ्लोट अ कंपनी. इसका मतलब नहीं है कि मतलब दैट अमाउंट हैव टू हैव इन योर like in your bank account, in the company's bank account, not necessarily, but in the books there must be at least 1 lakh rupees at least for floating a private limited company. तो लिमिटेड के लिए कुछ अलग फिगर होगा. तो ये नॉर्म चेंज हुआ है. अभी बोल रहा है कि मिनिमम का वैसा कोई लिमिट नहीं है. मतलब यू हैव टू हैव एटलीस्ट 1 L के, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है. देर आर सर्टेन अमेंडमेंट इन द MCA. तो let's say I'm floating a private limited company with 1 lakh rupees of paid up capital. Paid up capital वही हो गया कि जो मिनिमम अमाउंट, मतलब जो अमाउंट कंपनी के बुक्स में होगा फॉर इश्यूएंस ऑफ द शेयर, तो दैट इज आपका पेड अप कैपिटल. अब मिनिस्ट्री जो इशू करेगा नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज दैट मस्ट हैव द फेस वैल्यू ऑफ 10. तो आपका अगर मिनिमम, हम मतलब ओल्डर नॉर्म के हिसाब से बोल रहे हैं, लेट्स से आई एम फ्लोटिंग अ कंपनी विथ 1 LK ऑफ पेड अप कैपिटल, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1 lakh divided by 10, I can show you here writing. So paid up, let's say my paid up is 1 LK. मिनिस्ट्री जो मुझे फेस वैल्यू के शेयर्स इशू कर रहा है, दैट इज 10 रुपीज पर शेयर, राइट? ₹10. यहाँ पे 1 मिस हो गया, ₹1 LK, राइट? तो हाउ मेनी शेयर्स can I have? Obviously 1 LK divided by 10, that is 10,000 शेयर्स. आपके मतलब मिनिस्ट्री आपको 10,000 शेयर्स इशू करेगा. आपको मतलब आपकी कंपनी के बिहाफ में. लेट्स से माय कंपनीज नेम इज XYZ Limited, and I have 10,000 shares in the name of my XYZ Limited. उसका शेयर होल्डर, जितना नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, उनके पास ये शेयर्स रहेगा. अब नाउ से लेट्स से this is the paid up capital, right? This 1 LK is the paid up capital. I have written already. अब मान लीजिए कि आई एम अ शेयर होल्डर, आई एम होल्डिंग 50%, एंड आई एम अनिक, आई एम होल्डिंग 50%, एंड यानी कि 5,000 शेयर्स, right? And another one guy is there, Mr. X, who is also holding 50%. तो उसके पास भी 5,000 शेयर्स है कंपनी का, XYZ. लेट्स से दिस इज प्राइवेट, लेट मी मेक इट प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड. लिमिटेड का कुछ नॉर्म अलग होगा थोड़ा सा, मतलब मिनिमम का या नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का नॉर्म थोड़ा अलग होगा. तो अब लेट्स से वी आर गोइंग टू रेज फंड, यानी कि वी विल as a private limited company, we can make certain private placement for raising fund. मुझे कुछ इन्वेस्टर मिला है for my product, which will be like which is my company's product actually. तो वो share, like the investor is interested in this particular company. So what he will be doing, he will be investing in the company in lieu of the shares.
अब मान लो कि he has decided to have the 20% शेयर्स, तो उनके पास 2000 शेयर्स होगा। और हम लोगों में, क्योंकि मेरा टोटल 10,000 ही है, इससे ज्यादा हम 10,000 शेयर से ज्यादा नहीं है, सो वी हैव टू डाइल्यूट 2000। तो हो सकता है एक्स पूरा 2000 डाइल्यूट कर रहा है, या मैं और एक्स कुल मिला के 2000 डाइल्यूट कर रहा हूँ, कोई एक, या तो फिर मैं 2000 डाइल्यूट कर रहा हूँ, वट एवर इट इज। सो 2000 शेयर्स विल बी सोल्ड, लेट्स से बाई अनिक, टू मिस्टर वाई, मिस्टर वाई, हु इज एन इन्वेस्टर, एक्सटर्नल इन्वेस्टर। ठीक है, तो ही इज एन इक्विटी इन्वेस्टर, ही इज investing in my company XYZ Limited. He is taking 2000 shares, तो मेरा, मान लो कि मैं ही अपना शेयर्स बेच रहा हूँ, तो 3000 शेयर्स मेरा रहेगा। सो इन दैट वे द एंटायर सिनेरियो ऑपरेट्स। अब क्या होता है कि एक मैक्सिमम का लिमिट होता है, मैक्सिमम का जो लिमिट होता है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम का लिमिट। मतलब आपका कुछ मतलब स्लैब होता है, तो जो स्लैब के हिसाब से आप रजिस्टर करवाते हो, अकॉर्डिंगली आपका ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल यानी हाउ मच यू कैन इशू द, और हाउ मच यू कैन रेज, ऑथराइज, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। मेरा पेड अप तो 1 लाख है, यानी कि फिलहाल मेरे पास 1 लाख, कंपनी के पास 1 लाख कंपनी के बैलेंस शीट में है। मतलब नॉट नेसेसरली इन द बैंक अकाउंट, मेरा एसेट और कैश मिला के, बैंक बैलेंस मिला के मेरा 1 लाख होना चाहिए। उसमें हो सकता है कि मेरा 80%, 90% एसेट ही है। मैं कंप्यूटर खरीदा हूँ, मेरा कंपनी के नाम पे हम क्या बोलता है कि लैपटॉप खरीदा है, 2-3 लैपटॉप्स खरीद लिए, एक लैपटॉप खरीद लिया, तो उसमें 80,000 का एक लैपटॉप खरीदा है, 20,000 इज इन द बैक। सो कुल मिला के मेरा 1 लाख का नेटवर्थ हो गया। ठीक है, सो दैट इज द पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है कि आई कैन रेज अप टू 10 एल। अभी तो आई हैव एट द इंसेप्शन मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम एक मिनिमम से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 1 एल के से हम शुरू कर रहे हैं। अब आगे चल के जब कंपनी बड़ा होगा, तो आई हैव टू रेज फंड। तो मेरा अभी मेरे पास एक इन्वेस्टर है जो 22,000 शेयर्स ही लिया है मेरा, उसके अगेंस्ट में हो सकता है कि बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट एंड वैल्यूएशन एटसेट्रा, तो वी हैव agreed to have the company agreed the company's valuation at let's say 1 million, 10 lakh rupees। ठीक है, तो आगे चल के हो सकता है कि आई वांट टू रेज फर्दर फंड्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, तो ऑथराइज्ड कैपिटल मेरा और 9 lakhs रेज करने का जगह हम रखा है। बाद में आई विल बी इशूइंग शेयर्स अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द बिजनेस operations and all। So this is the structure. This is the equity share capital which is currently there in the balance sheet of आपका टाटा स्टील। ये टाटा स्टील का है, तो टाटा स्टील लिमिटेड। ठीक है, ये जो अदर इक्विटी, नेक्स्ट लाइन आइटम इज अदर इक्विटी। अच्छा, आई होप माय इक्विटी शेयर कैपिटल एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। ठीक है, ये था मेरा इक्वी लाइक द फंडामेंटल ऑफ इक्विटीज कहाँ से आया है। अब अदर इक्विटी, अदर इक्विटी को पहले रिजर्व एंड सरप्लस बोला जाता था। मतलब मेरे पीएल के प्रॉफिट से जितना अमाउंट हम बैलेंस शीट में ला सकते हैं, सो दैट इज माय रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका अभी रिप्रेजेंटेड एज अदर इक्विटी। अब इस दोनों को मिला के वी आर गेटिंग टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी, इसको बोलते हैं टोटल इक्विटी। सो आपको जो यहाँ पे 92,000, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, 92,000 करोड़ का दिख रही है, ये आईना शेयर में ऊपर ऊपर आपको दिखेगा, वन आईना शेयर। तो 92,000 करोड़ का जो दिख रहा है, सो दिस इज टोटल इक्विटी विच कंप्राइजेज ऑफ अदर इक्विटी, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस एंड माई इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड रहता है, ज्यादा से ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। ये बहुत बड़ा कंपनी है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस, क्योंकि इनका ईसॉप्स वगैरह होता है, तो वो डाइल्यूट होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यूजुअली रिमेन्स कांस्टेंट फॉर इयर्स। इसमें मेजर चेंजेस कब होता है, मेजर चेंजेस होता है, अच्छा ये और एक चीज बोलता है यहाँ पे,
related to this. We have discussed on the promoter holdings little bit, I think some of my older videos. तो क्या होता है कि कंपनीज क्या करता है कि अपना अपना मतलब प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा डाइल्यूट करता करके वो फंड रेस करता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्यूआईपी सुनने को आता है, जो स्टॉक मार्केट में रिलेटेड है, दे नो दिस टर्मिनोलॉजी, क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। लेट मी राइट हियर, क्यूआईपी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी कि कुछ इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूशंस यानी कि इन्वेस्टर है, हो सकता है आप पकड़ लो उसको इन्वेस्टर, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ही मैक्सिमम आता है इसमें। तो वो लोग क्या करते हैं कि दे इन्फ्यूज मनी इन द कंपनी, ठीक है। तो किसके अगेंस्ट में? इक्विटीज के अगेंस्ट में। इसीलिए तो इक्विटी आपका सेफ बेट होता है, जहां पे कोई आपकी कंपनी में फंड इन्फ्यूज कर रहा है, मगर यू नीड नॉट टू बी like you need not to pay any debt or need not to have the liability of repaying the debt। तो वो चीज आपका नहीं होता, तो इक्विटी इस सेंस में आपका सेफ बेट है फॉर द बिजनेस, एंड दैट्स व्हाई ऑल कंपनीज वांट टू रेज फंड इशूइंग इक्विटी। तो आपका क्या होता है कि आप जो इशू करोगे, जैसे हम यहाँ पे डाइल्यूट किया था इस एग्जांपल में, आई हैव डाइल्यूटेड, मेरे पास 5000 शेयर्स था, आई हैव डाइल्यूटेड 2000 शेयर्स टू मिस्टर वाई एंड माय शेयर केम डाउन टू 3000। वैसा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के टाइम मैं बहुत टाइम देखा जाता है जो कि प्रोमोटर, मतलब अगर फ्रेश इशू होता है अलग होता है, मगर मैक्सिमम टाइम करते हो प्रोमोटर अपना स्टेक थोड़ा डाइल्यूट करता है। मेरे पास 55% होल्डिंग है, हम 1% डाइल्यूट किया, 2% डाइल्यूट किया, मेरा होल्डिंग, प्रोमोटर का होल्डिंग 53% हो गया। और बाकी का जो उसमें जो जितना शेयर्स आता है, 2% 3% में जो शेयर्स आता है, वो शेयर्स लेके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में इंस्टीट्यूशंस इन्फ्यूज फंड इन द कंपनी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर हाउ क्यूआईपी ऑपरेट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नॉन कंट्रोल, नेक्स्ट लाइन आइटम इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। दिस इज वन अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या होता है ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? ट्राई टू अंडरस्टैंड, let's try to understand what is non-controlling interest. We have discussed on subsidiaries in video number 1, right? The consolidated balance sheet, consolidated profit and loss statements। तो consolidated financial statements मतलब होता है कि आपका एक स्टैंड अलोन है और उसका कुछ सब्सिडियरीज है, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज अगेन रिलेटेड टू दिस सब्सिडियरीज। आपके पास ऐसा कुछ सब्सिडियरीज है जिसका 100% आप ओन नहीं करते हो, राइट? 100% आप ओन नहीं करते। आई सेड होल्ली ओन्ड सब्सिडियरीज, यानी कि 100% स्टेक पेरेंट कंपनी के पास है, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड क्या बोलता है, दैट इज कॉल्ड होल्ली ओन्ड सब्सिडियरीज। अब क्या होता है कि कुछ टाइम होता है, सब्सिडियरीज कब होता है, मतलब व्हेन एवर द पेरेंट कंपनी होल्ड्स मोर देन 50%, वो 50.1% भी हो सकता है। तो दैट विल बी लाइक, दैट कंपनी विल बी सब्सिडियरी ऑफ द पेरेंट। मतलब मेरा कंपनी एक्स वाई जेड, वो किसी कंपनी को खरीदा है, एक्विजिशन किया है, जिसका 50.1%, यहाँ पे लिखता है, लेट्स राइट हियर, 50.1% इज हेल्ड बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो एक्स 50.1% ऑफ कंपनी जेड वाई एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो मेरा कंपनी एक्स वाई जेड क्या किया, जेड वाई एक्स बोल के कंपनी को, कंपनी का स्टेक खरीद रहा है। इफ आई एम होल्ड परचेसिंग मोर देन 50%, 50.1%, so I'll be having the controlling stake in my hand. Then this XYZ will become the subsidiary of ZYX will become the subsidiary of XYZ, XYZ will be the parent, right? और नेचुरली क्या होगा कि आपका
जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, इसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 49.9% कैन बी हेल्ड बाई अदर कंपनी और अदर ग्रुप ऑफ कंपनीज, मेनी अदर कंपनीज. सो दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर. तो ये जो माइनॉरिटी स्टेक है विच इज नॉट ओन्ड बाई द पेरेंट, उसका एक लायबिलिटी आपके बैलेंस शीट में आता है, एक्स वाई जेड का बैलेंस शीट में आता है. 49.9% जो स्टेक है कंपनी का, मतलब नॉन कंट्रोल्ड यानी कि माइनॉरिटी जो स्टेक है, इसका एक लायबिलिटी मेरे बैलेंस शीट में आ रहा है, विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड हियर एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. अब ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है? That is something we will try to understand. The value, whatever 396, 397 crore value is getting reflected in as non-controlling interest for FY24 for Tata Steel. That is coming from this non-control, मतलब minority interest, minority stake. अब ये किस बेसिस पे आ रहा है? लेट से आपका सब्सिडियरी का वैल्यू है 100 शेयर. सपोज करो आपका सब्सिडियरी का वैल्यू है 100 शेयर और आपका 49.9%. अच्छा, अब ये जो 100 शेयर का सब्सिडियरी का वैल्यू बोल रहा हूँ, यानी कि ये दिस इज द फेयर वैल्यू. अब फेयर वैल्यू का टर्मिनोलॉजी आएगा तो यू विल आस्क मी व्हाट इज फेयर वैल्यू. This is exactly not enterprise value. Enterprise value also is a terminology I will be discussing later on. तो फेयर वैल्यू यानी कि दिस इज द डिसाइडेड वैल्यू. मान मान लो कि आई एम एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेजिंग द कंपनी जेड वाई एक्स लिमिटेड. तो जेड वाई एक्स का मैनेजमेंट और एक्स वाई जेड का मैनेजमेंट बोथ हैव टू अराइव एट सर्टेन वैल्यूएशन, सर्टेन एक्सेप्टेड वैल्यूएशन, राइट, सर्टेन एक्सेप्टेड वैल्यूएशन विच इज फेयर वैल्यू. अब ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? इट्स नॉट ओनली ऑन टू मैनेजमेंट, देयर मस्ट बी अ वैल्यूअर, सेपरेट वैल्यूएशन एक्सपर्ट मस्ट बी इन्वॉल्व ओवर देयर, जो मैक्सिमम केसेस में आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ही होता है. तो दे प्ले द रोल फॉर एज अ वैल्यूअर हियर. तो एक एज पर उसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल का भी जरूरत होता है. मतलब हो सकता है कि मेरे साथ आपका कुछ पैक्ट है और मेरा ही कंपनी है, मेरे भाई का कंपनी है, हम लाइक वी हैव से डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑल टुगेदर. सो वी आर डूइंग सम हियर एंड देयर एंड showing some odd valuation जो viable नहीं है. तो that is why this third party valuer is there and regulatory approval is also mandatory. If both of the management approve some awkward valuation, it will not be and if the third party is also involved over there, but they will get stuck whenever it will come to the regulator. That's why this entire deal happens in a fair way, and that is why this valuation is fair valuation. So fair, let's say fair valuation of the company is 100 शेयर. तो उसका 49.9% कितना होता है? 49.9 शेयर. और थोड़ा सा और थोड़ा इजी टर्म में अगर देखते हैं तो मान लीजिए कि फॉर इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको और थोड़ा इजी करता है. तो मान लो कि आपका 80% स्टेक मेरे पास है, 20% आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है. ये थोड़ा समझने में आसानी होगी. सो 20% विल बी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. सो 20% ऑफ 100 शेयर इज हाउ मच? 20 शेयर. So that 20 share will come as the minority interest in my balance sheet. In the liability part, or let's say the after the equity, this will come as the minority interest. Right? So I hope this is clear. Next line item is, अच्छा, इसके बाद जो entire liability portion आएगा, this is the equity part. Next, the next the liability part will be two halves, just like asset part. One is the long term one, non-current, and the short term one, यानी कि current. Current यानी कि which is related with which will be for 1 year, and more than 1 year everything will be non-current, right? तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट लाइन आइटम, हैव अ चेक. financial liabilities, the first line item is borrowings. This is non-current borrowings, long-term borrowings. Okay, this usually this usually have uh,
very like big impact on the company's balance sheet, right? So these borrowings, you can see for Tata Steel, this is 51,577 crore, right? 51,577 crore, huge amounts. हाँ, तो कुछ कंपनी एब्सोल्यूट टर्म में ये बहुत ज्यादा है, मगर इफ यू consider it in terms of equity, that is why debt to equity ratio is very important. So it is less than 1 for Tata Steel. हाँ, मतलब we have to see how much debt you can serve, right? उसके लिए कुछ रेशियोज हैं, डेट सर्विसिंग रेशियोज वगैरह हम लोग देखेगा। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एब्सोल्यूट टर्म में योर डेट इज 52,000 crore फॉर अ कंपनी having total equity of 2,000 crore. It's very very big, but a company who is having 90,000 92,000 crore of equity, for him this borrowings is manageable, right? So debt to equity becomes very important. We'll discuss on the ratio part later in a separate video altogether. So this is the long term borrowing of the company. So the trend of the long term borrowing is very important. Now I'll show you one example जो हम like which had a very beautiful impact on the stock price of a company. Let me show you. The name is Suzlon Limited. I will show you the changes in balance sheet and rather changes in the specifically changes in the non-current borrowings, that is the long-term borrowings, and how did it impacted the overall performance, stock price performance of the company. So where it is, this is the balance sheet, right? यहाँ पे clearly visible आपको, I hope screen is visible to all of you. This is the borrowings. Let me show you the long term borrowings. You can see in March 13 यानी कि 2013 में Suzlon had a 10,000 11,000 crore of long term borrowings, 11,600, 10,700, 9,200. Here is a change, 4,800, but still big. Again it went up to 7,700, 6,200. It came down to 842 crore in 2020, but again went up to 6,000 crore, 5,500 crore. And यहाँ पे आपको very important is from 2022 to 2023 stock like the long term borrowings came down from 5,500 to 1,500 crore. 5,500, 5,600 to 1,500 crore. So here is the catch. Here is the catch, and this is the time which actually laid the stock prices of Suzlon. इसके बाद ही actual stock price में movement हुआ है Suzlon का. It gained lots of investors' interest, this reduction in the long-term borrowings, and afterwards finally it came down to 50 crore. So in this entire period, Suzlon gained quite a lot, right? तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे 6,000 crore to 800 crore, so that was a significant reduction. Then when like was there any impact on the stock prices? I'm really not very sure about it. I don't think so. और अगर वो होता है होता भी, so that was not sustainable. Obviously, it is a attractive change which attracts investors. But one clue I can tell you, it's very difficult to take a call, or let's say it's very difficult to say, no, this is not sustainable, and this time it is sustainable. It's very difficult to take a call. But one thing I can tell you, we have to have a look at the overall business environment for the company as well as management commentary. Management commentary is very important in tandem with the changes in the balance sheet. क्या management का क्या intent है? The intent of the management, the strategies adopting in the by the management, and what are the prospect of the business
or how favorable is the business environment, all together can help you to take decisions. Anyways, let's come back. अच्छा, नेक्स्ट वन इज लीज लाइबिलिटीज. लीज लाइबिलिटीज मतलब आपका कुछ प्रॉपर्टी या आपका कुछ इक्विपमेंट, कुछ आप लीज में अच्छा सॉरी, दिस इज लाइबिलिटीज. ऑब्वियसली यू आर नॉट गिविंग इट, यू आर टेकिंग द लीज, like you are taking some certain property or some equipment on lease basis. maximum time property होता है. तो आपका हो सकता है कि आपका इंटर प्लांट लीज में लिया हुआ है, तो दैट उसके लिए आपका यू हैव टू पे समथिंग राइट टू द. सो इट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन द लीजर एंड लीजी कितना अमाउंट का डीलिंग्स होगा. सो वट एवर इज पेएबल दोज आर लाइबिलिटीज. सो लीज, towards lease whatever you are paying, that those are lease liabilities. So that is getting reflected here. तो उसके बाद मेजर लाइन आइटम कुछ नहीं है, ठीक है. सो दोज आर ऑल टैक्स लाइबिलिटीज एक्सेट्रा. सो फाइन. अदर लाइबिलिटीज आप देख सकते हो खोल के, ये एग्जैक्टली व्हाट अदर लाइबिलिटीज ऐसा आप खोल के देख सकते हो. देयर आर नरेशन ऑफ लाइक ऑफ द लाइन आइटम्स इन द नोट. सो ये नोट है, ये जो आपको 26, 22, 12 ये सब दिख रहा है, दोज आर नोट्स, राइट. So this is the non-current liabilities. The most important is the borrowings, what I feel. And next one is the current liabilities, जो आपका शॉर्ट टर्म वन ईयर का होता है. इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द बोरोइंग्स. अब बोरोइंग्स आपका यहाँ पे भी है आपका करीब करीब 30,000 करोड़ का टाटा स्टील का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है. ये सॉरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है. व्हाट इज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स? दिस इज नथिंग बट द वर्किंग कैपिटल लाइबिलिटीज. ठीक है. तो working capital will be discussing on lots of like one very important or interesting topic is working capital, but these are all short term working capital in nature. So these liabilities are associated with the working capital need of the company for like every time, I mean almost every time. So this is another one important point. Then another one important point is trade payable, जो आपको पे करना है. मतलब your company got some credit from some vendor or from let's say you are purchasing something and you are not paying upfront. You are paying, you have been allotted 15 days of credit, 30 days of credit, maybe even longer than that. So that amount comes as a trade payable, right? देखिए टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. तो हो सकता है तो dues to micro and small enterprise, because these companies like this micro and small enterprises work as the vendor for these big companies, right? तो उसको तो पेबल होता है क्योंकि because they are giving you services, or you are paying maybe with after providing the service or after providing the goods, you are paying them in 30 days. So that is getting reflected as trade payables. So these are the key line items for the current liabilities. So altogether, आपका after adding up आपका current liabilities आ रहा है, and total current liabilities and total non-current liabilities together becomes your liability, with which you are adding up equities, total equities, and you are arriving at the figure which is equivalent to your assets, total assets. So that is it regarding the balance sheet. Afterwards, we will be in the next video, we will be discussing on some other, let's say where I shall be discussing on the cash flows and many other interesting topics as well. So this much is enough in this particular video. I hope you have enjoyed this video and found this video informative. If you really like it, then I'll be very much grateful. And also, please don't forget to subscribe my channel for getting this type of informative videos. And thank you for your valuable time.